हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज डिबेंचर चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 112. लेट्स बिगिन. So here is the question. See, Sachin Marble Limited issued 12,000 debentures of rupees 100 each. हमने शेयर्स के क्वेश्चन किए हुए थे, अभी डिबेंचर्स आ रहा है. 100 रुपीज का डिबेंचर है, तो जैसे ही 100 रुपीज आप देखते हो, यू शुड जस्ट लुक एट द पेमेंट पैटर्न, राइट. तो किस तरह से पैसे मंगवाए, 30, 45, 25. सो इट इज द पेमेंट पैटर्न. 15,000 डिबेंचर्स, 15,000 डिबेंचर्स कितने की है? 100 रुपीज का है. 30, 45, 40, 25, 30, 45 and 25. So total it makes 100. 30 rupees is the amount to be called at the time of application. Second amount is allotment and third amount is call money, right? हमें पता ही है इतना. तो अब देखते हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड. अच्छा, एक और बात, इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट 10% पर एनम. हमें नॉर्मली इंटरेस्ट की एंट्री स्पेसिफिकली पूछी हो तो ही लिखनी है, अदरवाइज हमें इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऐसे टॉपिक वाइज हमें एंट्रीज देखनी है. तो 10% डिबेंचर, दिस इज जस्ट अ नेम ऑफ डिबेंचर, so nothing to do, no calculation is to be done right as of now, right? So इधर लिखना है 10% डिबेंचर. Okay, so this is just a name, nothing to do with, no calculation part is involved in this, right? अच्छा भैया, हमें एक बार ध्यान में रखना, हमें कितने डिबेंचर्स इश्यू करने हैं? 12,000 डिबेंचर्स इश्यू करने हैं. सो हियर वी वुड राइट 12,000 डिबेंचर्स, राइट. हमें 12,000 डिबेंचर्स इश्यू करने हैं ना भैया. So 12,000 debentures are to be issued, but applications are issued for 15,000 debentures. Okay. So summary is given here in the question, right? ये रहा, ये रहा. हाँ, एप्लीकेशन का है 30 रुपीज और एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिबेंचर्स. सो पहली एंट्री में हम 15,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई द वेरी फर्स्ट एंट्री, bank account debit to debenture application, bank account debit to debenture application account. 15,000 debentures multiply 30 rupees है ना भैया? Yes, this one, the 30 rupees amount, right? So 15,000 into 30 आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, 4.5 lakhs, 4,50,000, right? So the amount which is credited here in debenture application in the first entry is debited in the second entry, right? So debenture application account debit 4.5 lakhs to, जो नाम था ना ये 10% डिबेंचर्स, यस, ये आपको लेना है. 10% डिबेंचर्स. अच्छा, 10% डिबेंचर्स में कितना जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाई 30 रुपीज. ओके, सो 12,000 मल्टीप्लाई 30 रुपीज, सो इट विल मेक 3,60,000, सो 3.6 लाख. और बाकी के पैसे हमें रिफंड कर देने हैं, सो टू बैंक अकाउंट, राइट. 0.9 lakhs. ये 90,000 आप लिखोगे फुल अमाउंट, राइट. फर्स्ट टू एंट्रीज आर ओवर. थर्ड एंड फोर्थ एंट्री, थर्ड एंट्री क्या होती है? डिबेंचर अलॉटमेंट टू, जैसे करते थे ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और डिबेंचर्स का तो हमेशा कोई नाम होता है. अगर नहीं दिया हुआ तो आपको लिखना है ब्लैंक परसेंट डिबेंचर्स, समझे आप? और आपको सिर्फ डिबेंचर्स नहीं लिखना है, whatever rate of interest is given, affix it, prefix it before the name of it, right? 10% debentures account. कितना आएगा? कितना आएगा? 12,000 मल्टीप्लाई 45 रुपीज आएगा. यस, 12,000 मल्टीप्लाई 45. कैन यू प्लीज डू इट? 12 was 48, 4,80,000 or 60,000. So it will be 5,40,000, right? 5.4 lakhs, 5,40,000. और इसमें कोई डिफॉल्टर नहीं था, so the full amount is received. So bank account debit to debenture allotment, bank account debit to debenture allotment, full amount is received.
5,40,000. Okay, and the last two entries for call money. Okay, 12,000 multiply 25 rupees कर दो आप. 12,000 multiply 25. डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. या डिबेंचर कॉल भी लिख सकते हो, जैसे लिखते थे ना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, उसी तरह से डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट, डेबिट टू 10% डिबेंचर्स. कितना होगा? 12,000 मल्टीप्लाई 25, 3 लाख रुपीस. And sixth one, the full amount is received, so bank account debit to debenture final call account. Full amount 3 lakh rupees is received. There is no defaulter in this question, right? So that's it. पहला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बढ़िया शुरुआत हमारी हो चुकी है. See you in the next question. Till then, take care. Bye bye. Keep studying. जय हिंद.